And has the RSS now confirmed Narendra Modi's choice? In fact, Ram Madhav says that we have conveyed to the BJP our views on the leadership. He also goes on to say that our job is to convey the nation's mood to the BJP. Let's listen in. एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देश चाहता है और यह बात हम हमारे सारे अधिकारी प्रवास में महसूस करते हैं। यही बात कल 2 दिन के बैठक में भी सामने आई। इसको पार्टी के नेतृत्व को कन्वे किया गया है। अब निर्णय लेना तो उनके अपने टाइमिंग को लेकर और बाकी चीजों को लेकर पार्टी को ही करना है, पर हमारे तरफ से ये संदेश बिल्कुल जरूर दिया गया है कि एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर देश की जनता वोटर चाहता है। मोदी का नाम आप लोगों ने आरएसएस ने बीजेपी को दिया है, बेसिकली परिवर्तन से आप मोदी का रेफरेंस कर रहे हैं? नहीं, तो विशेष प्रकार का परिवर्तन क्या है ये तो सबको मालूम है किस प्रकार का है, और ये बात भी सबको विदित ही है कि जनता का समर्थन, जनता का आदर किस व्यक्ति या किस प्रकार के किस रूप में है, ये बात सबको स्पष्ट है। All right, Tavleen is on the phone line breaking down the details of that crucial statement. Tavleen, this is one of the very first direct statements, in fact, coming in from the RSS, where he says, in fact, that this is a foregone conclusion, that obviously Narendra Modi is the change that the BJP is talking about. The only decision then is about the timing. Yes, that is correct. Once again, the RSS has confirmed, for that matter, that Narendra Modi's elevation as the prime ministerial face for the BJP has already been conveyed to the BJP in the last 2-day meet that took place in the national capital. If you remember, even yesterday, very categorically, the RSS statement and the sources within the RSS had told us that there is no dispute as far as the leader of the BJP is concerned. Now, it's really up to the BJP to take a call, and what we're hearing from our sources is that this week itself, there will be a parliamentary board meeting where this announcement is likely to take place. All right, then it's just a matter of time when we'll see that announcement. Tavleen, many thanks.